I think what people never share about reading books is that what it takes for a book to really change the direction of your life and really hit you in the chest is that it has to be the right time. The right message at the right time makes an exponential difference in your life. Hi everyone, welcome back to the channel. On this channel, I post videos on managing personal finance, entrepreneurship, investing and a lot of other stuff that comes to my mind. So make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon to get notified whenever I post a new video. So today's video is going to be a book review and a lot of you guys have been requesting me to make videos in Hindi. So I'll try my best to make a few videos in Hindi from now on. Actually this video is gonna be in English as well as Hindi. So I hope you guys enjoy this video. So this is one of the books that I recently completed reading. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बुक को मेंशन किया था. It has been just 2 days that I completed reading this book and I so much felt the urge of sharing it with all of you guys. In this book, Morgan Housel has presented a few timeless and priceless lessons on wealth, greed and happiness, and the book just costs $400. The amount of knowledge that this book provides is literally not comparable to the price. It's a brilliant book. In this video, I'm going to present to you guys my 5 key takeaways from this book. Number 1, luck and risk play a very important role in the outcome of any event. So we tend to think of practice like this, like the more time I put in, the greater the results will be and it'll be a linear graph. But really, it sort of becomes a little bit like this. You get a little bit of growth at the start, but after that you can sort of stagnate. अक्सर हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है हम उसी के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाते हैं. वी नेवर अकाउंट फॉर द ऑड्स ऑफ लक और रिस्क प्लेइंग देयर गेम इन आवर प्लान. हमें लगता है हम जितना एफर्ट डालेंगे हमें उसी प्रोपोर्शन में रिजल्ट्स मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है. लाइफ के टर्म्स इतने भी सिंपल नहीं है. मॉर्गन ने कहा है, एवरी आउटकम इन लाइफ इज गाइडेड बाय फोर्सेस अदर देन इंडिविजुअल एफर्ट. हम अक्सर दूसरों के फेलियर्स के लिए उनके गलत डिसीजंस को जिम्मेदार ठहराते हैं, whereas our own failures are chalked up to the dark side of risk. तो मॉर्गन ने कहा है, हमें बहुत केयरफुली अपने रोल मॉडल को चूज करना चाहिए and at the same time we should be very careful who we look down upon and wish to avoid becoming. हमें नहीं पता किसके सक्सेस या फिर फेलियर के पीछे लक या फिर रिस्क का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है. और ये बहुत ही डीप थॉट है. अगर आप इसको समझ पा रहे हैं then great. Takeaway number 2, you will never have enough in your life. आप सबने स्कैम 1992 तो देखा ही होगा. हर्षद मेहता ने स्टार्ट किया था एज ए लेजिटिमेट स्टॉक ब्रोकर. ही क्लाइम्ड हिज वे अप द लैडर स्लोली. पहले एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर बने, फिर बहुत सारा पैसा कमाया. इनफैक्ट जितना हर्षद मेहता ने सोचा था उससे बहुत ज्यादा कमाया. एंड देन हिज ग्रीड कंज्यूम्ड हिम. हिज ग्रीड फॉर मोर मनी टू सैटिस्फाई हिज एवर एक्सपैंडिंग ईगो. ही हैड नो सेंस ऑफ इनफ. उनको जो जरूरी नहीं था उसके पीछे उन्होंने सब कुछ गवा दिया. इतने साल की मेहनत, इतना सारा पैसा जो उन्होंने लेजिटिमेटली कमाया था, ऑल टू सैटिस्फाई हिज ईगो. So the hardest financial skill you need to learn is getting the goalpost to stop moving. जैसे जैसे आप अपने करियर में या फिर अपने जॉब में या अपने बिजनेस में आगे बढ़ोगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी. You'll have more power, more money, more prestige. लेकिन अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आप जिंदगी में कभी नहीं खुश हो पाओगे, चाहे आप जितने भी पैसे कमा लो. आप में एक सेंस ऑफ इनफ होनी चाहिए. After all, happiness is just results minus expectations. But how much is enough? Does enough mean conservatism? Does enough mean leaving opportunity and potential on the table? Definitely not. There's a saying that the only way to know how much food you can eat is to eat until you are getting sick. So you have to define how much is enough for you. Also, it is very important to not getting attached to anything. Your reputation, your accomplishments, your money. क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कभी नहीं रिस्क कर सकते, no matter the potential gain. Our relationships are invaluable, friends and family are invaluable, freedom and independence are invaluable, love is invaluable, happiness is invaluable. चाहे जितना भी रिटर्न क्यों ना हो, हमें ये सब चीजें कभी नहीं रिस्क करना चाहिए. Takeaway number 3, the power of compounding. वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा. एंड इट्स नॉट स्ट्रेंज कि कोई भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले वॉरेन बफेट या फिर कोई भी और दूसरे सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ किया है अपने लाइफ टाइम में, या फिर उन लोगों ने कौन सा वैल्यूएशन मेथड यूज़ किया है, कैसे उन लोगों ने मल्टीबैगर स्टॉक्स चूज़ किए थे, ये सब जानने की कोशिश करते हैं. एंड इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स समथिंग दैट एवरीवन डज. मैं भी ऐसा करता हूँ. इवन आई डू फॉलो देयर स्ट्रैटेजीज, देयर की वैल्यूएशन मेट्रिक्स. But we never regard the most crucial factor that helped Warren Buffett create such an enormous wealth, and that is time.
A very few people know this. Of the $100.6 billion of net worth of Warren Buffett, $81.5 billion came after his 65th birthday. That means approximately 80% of his wealth was accumulated after he had turned 65. At that age, most people give up on their life and they start withdrawing money from their pension and retirement funds, let alone investing. Warren Buffett's skill is investing, but his secret is time. सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि बस आप हाई रिटर्न्स को चेस करते रहे. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर जाए, बट इट कैन नॉट बी रिपीटेड. सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग मीन्स अर्निंग द गुड और एवरेज रिटर्न्स फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम. तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने दीजिए, डोंट इंटरफेयर एंड लेट कंपाउंडिंग डू इट्स मैजिक. टेक अवे नंबर 4, हैव सफिशिएंट रूम फॉर एरर. फाइनेंस और इन्वेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम 80% टाइम गलत हो सकते हैं, फिर भी आउटकम्स हमारे फेवर में होने के चांसेस बहुत हाई होंगे. हमें ये समझना और एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में अनसर्टेनिटी और रिस्क हमेशा रहेंगे. तो एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है. हम में से 100% एक्यूरेसी के साथ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे. एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज बिफोर अस, COVID-19. No one expected this ever. The entire country, in fact the entire world went on an indefinite lockdown. Markets crash हो गए, recession आ गया, and a lot of people suffered. So it's very important to have a safety margin. Charlie Munger once said, the best way to achieve felicity is to aim low. Takeaway number 5, wealth is what you don't see. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. हम अक्सर rich और wealthy में confuse हो जाते हैं. Rich people can be easily spotted by looking at their expensive cars, homes, possessions, often purchased on debt. Rich people go out of their way to make themselves known, to portray themselves as rich. पर wealth आपको दिखता नहीं है. Wealth एक option है, अपने इनकम को aggressively खर्च ना करने की और सेव करने की ऑप्शन. और ये ऑप्शन सबके पास है. Every individual can accumulate wealth if he just chooses to do so. Whatever we do initially is driven by our needs, and then comes wants and luxuries. पर एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम जो कुछ भी करते हैं वो बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं. Instead, if we decide to save past a certain level of income, we all can accumulate wealth. A lot of people have the idea that they should only save for a specific reason. But as we learned earlier, life isn't predictable. So start saving. Save to gain flexibility and control over your time. Save to prepare yourself for the unforeseen events that life might present before you at some point of time. So these were my 5 key takeaways from the book. Well, there is a lot more in the book, which if I start discussing right now, the video will become probably an hour long. So I recommend everyone to read this book at least once in their lifetime. If you found this video useful, do like the video and share with your friends. Also, if you have read the book, comment down below which was your favorite lesson from the book. That's it for today. I'll see you guys in the next video. Till then, keep crushing it.